Hi there, Namaskar, and welcome to our class on the subject of forensic medicine. आप में से जो भी इस समय लाइव बैठे हैं उनको दिल से मोस्ट वेलकम। एंड आज की क्लास जैसे आप जानते हो इज़ अ स्पेशल MCQ क्लास और आज हमारा है स्पेशल MCQ क्लास नंबर 6। ओके, इससे पहले हम 5 स्पेशल MCQ क्लासेस कर चुके हैं जिसमें वी हैव ट्राइड एंड सॉल्व्ड सम MCQs अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स जो हमने लेक्चर में पहले ही कवर किए हैं। तो आज हमारे पास में मौका है टू टॉक अबाउट एस्फिक्सिया 2। एस्फिक्सिया 2 इसीलिए क्योंकि हम एस्फिक्सिया 1 पिछली बारी हमने किया था एंड एस्फिक्सिया 1 में वी टॉक्ड अबाउट external compression of neck. If you remember in Asphyxia 1 MCQ class, we talked about external compression of neck जिसमें हमने hanging and strangulation के MCQs के बारे में बात करी थी। ओके, ग्रेट। मुझे पिछले 18 डेज में बहुत मज़ा आ रहा है because it has been a privileged journey for me to be with all you students on this platform of YouTube provided by Unacademy, and although whole nation and world is undergoing a massive pandemic right now, but इसमें हमारी कहीं पर भी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और इसी कॉन्टेक्स्ट से ये सारा जो सब्जेक्ट डिलीवरी है ये आपके पास आ रहा है और आपके पास लेके आ रहा हूँ मैं। My name is Dr. Sumit Tellewar. I am MD in Forensic Medicine and आप मुझसे पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से लगातार डेली क्लासेस में मिल रहे हैं where we are on to our journey which we have named as Cracking Forensic NEET PG 2021. जी हाँ, this all effort is to empower our students to sit in that NEET PG 2021 PG entrance examinations and feel confident about each and every MCQ that they are going to answer in that examination. ठीक है जी। इन सब के बावजूद कुछ ऐसा हो सकता है that from time to time you would want to get in contact with me. अगर ऐसा है प्लीज़ यूज़ टेलीग्राम ऐप। आपको अपने फ़ोन पे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है एंड देन यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस लिंक। यू टाइप दिस लिंक इन योर गूगल कर्सर ऑल्सो, दैट इज़ livedaily.me/neetpg एंड वो टेलीग्राम ऐप पे सीधे आपको मेरे पास ले आएगा। तो हमारे साथ में ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ चुके हैं। डैन इज़ ऑलरेडी हेयर, सुष्मिता हैज़ जॉइंड अस। डैन एंड सुष्मिता, most welcome, very welcome, and I guess one more Minal should be joining us as soon as possible. Then we had Manas also with us yesterday, hopefully वो भी आने वाले हैं। There were 2 more students जो लाइव बने हुए थे हमारी क्लास पे, hopefully वो भी आएंगे। आज की जो हमारी MCQ की क्लास है एस्फिक्सिया में, उसमें 3 या 4 MCQ ऐसे हैं जो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस नहीं करे थे। तो आई एम इनवाइटिंग यू कि अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पहले लेक्चर देखा था एंड दे वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्राउनिंग और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस और प्रेशर ऑन चेस्ट लीडिंग टू एस्फिक्सियास, आज 3-4 बड़े कमाल के MCQs हैं जो हमने लेक्चर में डिस्कस नहीं करे थे। Ask them to join us as soon as possible. ओके, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन जिस चैनल पे इस समय आप हो वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास यूट्यूब के साथ आ रहा है एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग लाइव क्लासेस इवन इन द पैंडमिक टाइम्स, नॉट ओनली लाइव बट इंटरैक्टिव क्लासेस विद योर एजुकेटर। और वो इंटरेक्शन एजुकेटर के साथ में कैसे होता है व्हेन यू अटेंड लाइव MCQ पोल्स with your educator. The educator is teaching you live and you are giving
a mock examination with him. This boosts your confidence up, क्योंकि जिस दिन आप एग्जामिनेशन के उस एग्जामिनेशन रूम में बैठे होगे जहां पर आपको नीट पीजी अटेम्प्ट करना है, यू नीड दैट कॉन्फिडेंस वर्किंग फॉर यू ऑल द टाइम. अगर उसके सिवाय आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपके पास है टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस. दिस प्रिपेयर्स यू rigorously to attempt more and more updated test series जो आपके पास आती हैं, so that again your confidence get that little थोड़ा सा और boost, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ you are utter confident about everything. इसके सिवाय आपके पास आती है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस. अगर सबके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है, you can go on these sessions and clear your doubt with your educator, that too live. okay, so कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, आपके जो क्वेरीज हैं वो रियल टाइम आंसर किए जाते हैं. ओके, और ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो तो आपके पास में एक वंडरफुल मौका मौजूद है विच इज़ कॉल्ड एज स्पेशल क्लासेस. आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाइए प्लीज़ और स्पेशल क्लासेस देखिए. दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑन द ऐप, एंड वंस यू हैव सीन थ्रू देम, उसके बाद यू गो एंड सब्सक्राइब द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट यू नीड विच इज़ कॉल्ड एज अनअकैडमी नीट पीजी प्लस सब्सक्रिप्शन. आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 12 महीने या 24 महीने का, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. अगर आपको इसी साल एग्ज़ाम देना है, 12 महीने विल वर्क फॉर यू. अगर आपको अगले साल एग्ज़ाम देना है, 24 महीने विल वर्क फॉर यू. जब ये सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं, यूज़ माई रेफरल कोड दैट इज़ डॉक्टर सुमित लाइव. ये रेफरल कोड यूज़ करते ही आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट में से 10% का डिस्काउंट मिलता है. ये रेफरल कोड सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये रेफरल कोड आपके सभी दोस्तों के लिए है, ये रेफरल कोड आपके सभी रिलेटिव्स के लिए है. कोई भी कहीं भी अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस और प्रिपरेशंस, they can use my referral code and they shall get 10% discount. okay, तो ये है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए. और अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी जर्नी, जिसमें we will see what kind of questions are there for us in Asphyxia 2. So without wasting any other amount of time, here comes the question number 1. And question number 1 says, the most common manner of gagging is, options are suicide, accident, homicide or natural. okay, so I'll just wait for 10 seconds for all those students who are live to give the answer and to check the answers for themselves. okay, so inviting Dan and Sushmita to participate. okay, right now I can see their names. Dan and Sushmita, if you want to participate, please do participate, and let's see what your answers are. The question is, the most common manner of gagging is suicide, accident, homicide or natural. And Sushmita and Dan both say it is option number C, which is homicide, and which is probably the best answer of the lot. ये चीज़ हमने अपने ग्रेट, आप दोनों ने सही आंसर दिया है. ये चीज़ हमने अपने लेक्चर सेशन में भी करी थी, व्हेन वी सेड और वी वर टॉकिंग अबाउट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेजेस. सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, we said that this obstruction can happen at 3 levels, and the first level is the outermost level, which comprise of oral opening and nasal opening. If we cover the oral opening or nasal opening, the concept is called as smothering, and smothering commonly
could be accidental or homicidal. So smothering commonly can be accidental or homicidal, both. Then second level was middle level, where the obstruction was at the level of oral cavity. जब आप कोई कपड़ा ओरल कैविटी में डाल देते हैं, ओके, व्हेन यू इंसफलेट अ क्लॉथ इन द ओरल कैविटी, द concept is called as gagging. Okay, and if found at the time of autopsy as a cause of death, it is exclusively homicidal unless and until proven otherwise. Okay, and the third level is the innermost level, which is larynx. तो हम क्या देख रहे हैं, हम अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन में. द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज choking, and commonly people choke onto bolus of food. खाना खाते समय generally choking होती है. Okay, so it is more or less accidental unless and until proven otherwise. ठीक है. So 3 levels of obstruction, 3 different reasons for obstruction, 3 different names, and 3 different mannerisms or combination which can lead to these obstructions. Okay, so ये दोबारा हमने recreate किया है, ये आप याद रखिएगा. It's very very important for students to remember this. Let's take up our question number 2. Question number 2 is, there is a grossly drunk person who goes to a cafe to eat dinner. While eating, he suddenly holds his chest, falls to the ground, turns blue, and dies. The most likely cause of death is. Okay, हाय मीनल, हमने भी हमको ज्वाइन कर लिया है. वेलकम मीनल. और क्वेश्चन आपने देख लिया होगा. लेट्स पार्टिसिपेट कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए. सो ए इज स्मॉदरिंग, बी इज myocardial infarction, C is reflex cardiac inhibition, or D choking. So let's see what your answers are. Waiting for Sushmita, Dan, Minal to respond. क्या आंसर होगा इसका? Anyone? Grossly drunk person goes to a cafe suddenly while eating, suddenly holds his chest, falls down, turns blue, dies. क्या हो गया है इस इंसान को? Remember, he was eating food and he was grossly drunk. These are 2 very very important informations given in the question. ओके, सुष्मिता ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी, विच इज रिफ्लेक्स कार्डियक इनहिबिशन, एंड मिनल हैज आंसर्ड ऑप्शन नंबर बी, विच इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंड डैन हैज आंसर्ड ऑप्शन नंबर डी, विच इज चोकिंग. ओ ग्रेट, फॉर फर्स्ट टाइम पिछले 6 सेशन में सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है एंड एटलीस्ट सबका आंसर डिफरेंट है. गुड. सो वी डोंट हैव अ कंसेंसस हियर. बाय द वे, इस बारी जो सही आंसर मार्क किया है वो है सुष्मिता, एंड शी हैज कम अप विद आंसर नंबर सी, विच इज रिफ्लेक्स कार्डियक इनहिबिशन. नाउ इस MCQ में जो स्टोरी लिखी है, दिस स्टोरी टिपिकली इज ऑफ अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज कैफे कोरोनरी सिंड्रोम. ओके,
ये जो story है, this depicts a picture called as cafe coronary syndrome. Now cafe coronary syndrome is a name given to a condition where a person who is grossly drunk, okay, so he has consumed lot of alcohol. Focus, मैं भी क्या बोलने वाला हूं आपको, just keep listening to me very keenly. Alcohol is a kind of anesthetic agent because वो आपके reflexes slow करती है, because it causes cerebral depression. So a person who has consumed lot of alcohol does not have sharp reflexes as would be a sober person as compared to a sober person. So एक व्यक्ति जिसने अल्कोहल कंज्यूम नहीं करी है उसके रिफ्लेक्सेस जितने शार्प होंगे उतने अल्कोहलिक पर्सन के शार्प नहीं होंगे. Now this person goes to eat his food at a diner, and because his reflexes are not as sharp, there are chances that while he is eating the food, the epiglottis closure may not happen adequately while he is degluting his food. जब वो निगल रहा है वो क्लोजर नहीं होगा. As a result, the bolus of food can enter into his windpipe. जो bolus of food है वो उसके windpipe में जा सकता है. Now नॉर्मली भी जब भी हम कभी खाना खाते हैं तो ऐसा एक्सीडेंटल फिनोमेना होता है जिसको हम चोकिंग कहते हैं. ठीक है, ये हमने एस्फिक्सिया में पढ़ा है कि एक्सीडेंटली खाना खाते समय चोकिंग्स कैन हैपन, बट बिकॉज we are not grossly drunk at that point of time, the moment choking happens it generates a violent cough reflex in us. एक violent cough reflex generate होता है, and because of that violent cough reflex there are high chances that whatever obstruction is there it might just get thrown out. When you cough violently the obstruction may resolve, it may just come out of the respiratory tract, and even if it does not come out, the violent cough reflexes ensures that the lower passage of the respiratory tract is not relaxed, so that the obstruction which has entered the upper area of the respiratory tract does not pass to a lower areas. क्योंकि रिलैक्स नहीं होता है कफ रिफ्लेक्स से तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो लोअर डाउन पास ऑफ नहीं होता है. नाउ ऑन द बैकग्राउंड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कंसिडर दिस पर्सन हु इज ग्रॉसली ड्रंक. व्हेन दिस पर्सन एक्सीडेंटली हैज चोकिंग ही कैन नॉट generate that violent cough reflex because of his drunken status, and because of which the obstruction persists and the obstructive material may go at a lower level to obstruct the lower respiratory tract even more. तो अभी तक हमने क्या देखा? कैफे कोरोनरी सिंड्रोम is a condition where there is a person who is grossly drunk. He may have choking while eating, cannot produce excessive or cannot produce cough reflex. The obstruction persists at lower laryngeal level. So because of the absence of that violent cough reflex, the obstruction persists and it is trickled down to a lower laryngeal level. Now at that lower laryngeal level, the vagus nerve
is in proximity to the larynx. So at this lower laryngeal level, vagus is irritated because of its proximity to the lower laryngeal scenario. And as the vagus gets irritated, it increases the vagal discharge. And हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी, increased vagal discharge is increased parasympathetic drive to the heart, and suddenly his heart rate slows down and there is a sudden cardiac arrest. Okay, so increased vagal irritation से क्या होता है? Increased parasympathetic drive to heart, and this leads to cardiac arrest. Okay, now this all sequence happens so soon, okay, that this person who was eating food suddenly tries to clench his chest or neck, falls down onto the ground and dies because of the cardiac arrest. Okay, now कैफे कोरोनरी सिंड्रोम में ऐसा नहीं है कि एस्फिक्सिया नहीं हो रहा, क्योंकि चोकिंग तो हो रही है, बट बिकॉज ऑफ दैट चोकिंग पीपल जस्ट डजंट डाई सो सडनली कि वहीं पर एकदम से ही डेथ हो गई. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई चोकिंग इज नॉट द कॉज ऑफ डेथ हियर, ऑल्दो चोकिंग इज द फिनोमेना दैट इज हैपनिंग. तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस सडन कार्डियक डेथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स कार्डियक इनहिबिशन. ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं दैट दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स कार्डियक इनहिबिशन. ओके, तो हमने कैफे कोरोनरी में क्या देखा? कैफे कोरोनरी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी. व्हाट इज द फिनोमिना दैट इज हैपनिंग? द phenomena that is happening is choking. Okay, phenomena no doubt choking का है. So this person is experiencing asphyxia, but the cause of death is reflex cardiac inhibition. ओके, तो जहां पर इस तरीके का सिनारियो होता है वेयर अ पर्सन चोक्स सडनली एंड डाई विद इन अ मिनट ऑन द स्पॉट, वो इतनी जल्दी डेथ रिफ्लेक्स कार्डियक इनिबिशन के कारण हो रही है, वो चोकिंग के कारण नहीं हो रही. ऐसा हो सकता है अदरवाइज दैट अ पर्सन चोक्स ऑन टू अ बोलस ऑफ फूड बिकॉज ऑफ विच ही कैन नॉट ब्रीथ, and he may be made to go to a hospital, and while reaching hospital he may die, or after reaching hospital he may be saved. So choking से एकदम से इतनी instantaneous death नहीं होती जहां पर choking is a food material. ठीक है, so if we come back and have a look at our question, what we see is that one of the options was reflex cardiac inhibition. ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन की जगह कार्डियक अरेस्ट कुड हैव आल्सो बीन एन ऑप्शन. ओके, बिकॉज दैट लीड्स टू स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट बीट एंड अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट. सो इवन कार्डियक अरेस्ट कुड हैव बीन एन ऑप्शन, और अगर कार्डियक अरेस्ट होता ऑप्शन में देन यू शुड हैव गॉन फॉर कार्डियक अरेस्ट इटसेल्फ. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज इन समथिंग, एंड दैट इज कि अगर मैं इसके ऑप्शन में इसकी बजाय लिखता ना कार्डियक अरेस्ट, अगर मैं ये वाला ऑप्शन लिखता then lot of students get confused. Then why answer is not myocardial infarction? For a very simple reason,
that myocardial infarction is a complication of a sequel of an ischemic heart disease. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट की वैस्कुलर डिसऑर्डर का सीक्वल होता है या कॉम्प्लिकेशन होता है. एवरी कार्डियक अरेस्ट is not because of myocardial infarction and myocardial infarction is not equal to every cardiac arrest. Okay, so इस कंडीशन में जहां पर हमने ये पूरा हिस्ट्री दिया है that there is a person who is drunk and he suddenly has a bolus of food choking him, resulting in reflex cardiac inhibition. So the death happens by the virtue of reflex cardiac inhibition, which is equal to cardiac arrest because that's what it's ultimately going to cause. It's not equal to myocardial infarction because myocardial infarction is a complication of a long-standing vascular disease of cardiac vessels. Okay, commonly called as an ischemic heart disease. तो ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस आंसर करते समय. ओके, बिकॉज कॉमनली ये क्वेश्चन हिस्टोरिकली आया है पहले एंड एवरी टाइम इट हैज कम लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूज्ड बिटवीन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड कार्डियक अरेस्ट. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस बॉडी विच इज शोन इन द फोटोग्राफ, इट्स अ फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एज यू कैन सी, was found leaning on a wall inside of a deserted warehouse. एक डिजर्टेड वेयरहाउस के वॉल पे लीन करती हुई ये बॉडी पाई गई थी. द बॉडी हैज बीन बॉट टू ऑटोप्सी एग्जामिनेशन एज सच एंड यू कैन सी द बॉडी इज रैप्ड ऑल अराउंड लाइक अ पिन. ओके, हेयर पिन जैसी होती है ना, उसको बेंड करके रैप कर दिया है. द कॉज ऑफ डेथ इन दिस केस इज एंड द आंसर गिवन बाय डैन इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, एनीबडी एल्स? Minal also comes up with option number B. How about Sushmita? Sushmita, do you want to try? What's your answer? The options are traumatic asphyxia, positional asphyxia, strangulation or alcohol intoxication. So एक चीज तो क्लियर है इस एग्जाम्पल में that alcohol intoxication is already out because doesn't look to be a case of alcohol intoxication. ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन इज ऑल्सो आउट क्योंकि स्ट्रैंगुलेशन हैज टू डू समथिंग अराउंड द नेक एंड यू नो हेयर द कंप्लीट बॉडी इज काइंड ऑफ इन्वॉल्व्ड. और ये चीज़ हमने अपने टॉक में करी भी थी जब हम लेक्चर कर रहे थे. एंड द करेक्ट आंसर इज पोजिशनल एस्फिक्सिया. व्हेन वी वर टॉकिंग इन आवर लेक्चर, सम पॉइंट ऑफ टाइम वी टॉक्ड अबाउट अ कंडीशन called as positional asphyxia and a jackknife position. So if we say positional asphyxia, under this heading we talked about a condition, it's called as a jackknife position. Jackknife position is a position of a person where the body is bent like a hairpin. Okay, body bent like a hairpin. What happens when this phenomena occurs is that, याद रखने के लिए बता रहा हूं so that you can remember, you know, the jackknife position which compromises the physiology of the body. So what is the way to remember? The way to remember this complication is to remember that in this position, way to remember, what you need to remember is that the level of lungs go below the level of
diaphragm. And whenever this happens, the vital capacity of the lung decreases many folds, and if the person is stuck in this position, the respiratory efforts may ultimately die off. And when the respiratory efforts don't happen, the person will die of asphyxia. Now, why this is called as positional asphyxia? Because अगर आप इसकी पूरी डेफिनेशन को समझो, इस पूरी डेफिनेशन में the lungs are compromised purely because of the physiological position that they are situated in. There is no external weight, any trauma, any kind of weapon hitting the body. There is no loss of oxygen from the atmosphere. There is no compression on the neck, nothing. It's purely a position which is causing the asphyxia. That is why this is called as a positional asphyxia, not traumatic asphyxia. Traumatic asphyxia क्या condition होती है? जहां पर there is a weight on the chest wall, because of which the chest wall cannot expand, and that is the difference between positional and traumatic asphyxia. Traumatic asphyxia has weight on chest wall. For example, in cases of building collapses, और अगर कोई कोलैप्स बिल्डिंग में दब जाए, that would be a case of traumatic asphyxia if a ceiling falls onto his chest wall. Or a very critical condition called as overlaying, seen in infant deaths. Overlaying क्या condition होती है? That a parent who is sleeping with an infant on the same bed accidentally places his or her hand or foot, or you can say upper limb or lower limb, onto the chest wall of the small infant. Now, ये हाथ का या पाँव का वजन ही उस infant के लिए काफ़ी होता है to get asphyxiated. So that is called as an overlaying. It's an accidental death caused by the parent or the guardian itself, which is nothing but an example of traumatic asphyxia. पर दोनों ही cases में there is a weight on the chest wall. In positional asphyxia, there is no weight on the chest wall. ठीक है? Now let's take up our next question, and here it is on the screen. It's question number 4. A body is recovered from water. Okay, we are entering the arena of drowning now. So a body is recovered from water. The post-mortem staining is present on the chest and face. Okay, the most appropriate statement is, so the important word here is body is recovered from water. Post-mortem staining के बारे में पूछा गया है, and it is present on chest and face. The question is, which is the most appropriate statement regarding the condition which has been given to us? The statements are that it's a freshwater drowning. So whatever is written in the question, can we say it is freshwater drowning, or it is saltwater drowning, or post-mortem drowning, or a case of drowning in still water? So what do you think could be the answer? Okay, so question number 4, waiting for answers to come from Sushmita, Minal and Dan. Holding on for some time, you have read the question now. What could be the answer? Question number 4, freshwater drowning, saltwater drowning, post-mortem drowning,
or drowning in still water? क्या लगता है आपको? Come on, waiting. Minal, Sushmita, Dan, anybody else who is with us right now? Okay, please participate. Okay, I don't see anything getting updated on my screen. Chat box में आप आंसर्स नहीं डाल रहे हो, कोई बात नहीं. बट याद आया, जब मैं आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं तो मैं आपको कहता हूं दैट वहां पर आप अपने एजुकेटर के साथ में लाइव पोल्स करते हो. और लाइव पोल्स मतलब यही होते हैं, व्हेन एन एजुकेटर थ्रोज अ क्वेश्चन टू यू, you give answers live, and when an explanation comes to you, even if you have answered wrong, it gives you a confidence of participating and making your judgment either right or getting your judgment corrected. Okay, so we have Sushmita coming with the answer, and she says it's option number C, which is post-mortem drowning. ओके, मिनल एंड डैन ने अभी आंसर नहीं भेजा है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन एक्चुअली ड्राउनिंग से रिलेटेड है, बट दिस क्वेश्चन हैज टू डू समथिंग अबाउट जो हमने पोस्टमार्टम चेंजेस में पढ़ा था, विच इज पोस्टमार्टम स्टेनिंग. सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है दैट इट्स अ केस ऑफ ड्राउनिंग इन स्टिल वाटर. ओके, क्यों है चलिए देखते हैं. इफ यू रिकॉल, जब हमने पोस्टमार्टम स्टेनिंग की लेक्चर किया था, वी सेड पोस्टमार्टम स्टेनिंग हैपेंस ऑन द डिपेंडेंट पोर्शंस ऑफ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, अब एक बात सोचो, हमने इस क्वेश्चन में कहा है दैट अ बॉडी हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम वाटर एंड द पोस्टमार्टम स्टेनिंग इज सीन ऑन फेस एंड चेस्ट. तो डिपेंडेंट पोर्शन कौन सा होगा बॉडी का? द फेस एंड द चेस्ट, यानी कि द बॉडी विल बी अपसाइड डाउन इन द वाटर. एंड नॉर्मली व्हेन बॉडी ड्राउन्स एंड इट कम्स बैक आफ्टर डेथ टू द surface of the water, it comes upside down. Normally it comes upside down. The hands are hanging inside and the body is upside down. As a result, the dependent portion of the body which gets created after death in water is the face and the chest region of the body. ठीक है, but this can only happen if the water is still, यानी कि वाटर में या पानी में तेज बहाव नहीं है. इट इज नॉट फ्लोइंग फ्रीली, बिकॉज इफ द वाटर वुड बी फ्लोइंग वेरी वेरी फ्रीली, then body will keep on rolling with the flowing water and a constant dependent position will not be achieved in that body. So if the post-mortem staining is found, and that too on the expected front region of the body, it means that the water from where the body is recovered is a still collected water. It's not a fast flowing water. ठीक है, I hope from this talk you must have got मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ. By the way, we have some comment coming from Bikram and just let me read, क्योंकि बिक्रम ने कुछ लिखा है तो अच्छा रहेगा. उसने अगर लाइव लिखा है तो एक बार देख लेता हूँ क्या लिखा है उन्होंने. Bikram, I'm not supposed to
I understand you have a stomach condition and I don't know कि आपको किस तरीके का stomach condition है, but seems that you are saying painful. Try antacids. Okay, I can only say try antacid, and if something doesn't get relieved, please try and contact any doctor who can have a telephonic consultation with you. So my recommendation is, घर में एंटासिड होती हैं, जेलुसिल होगी, रैनिटिडीन होगी, पैंटोप्रोजोल होगी, उसके टैबलेट खाइए एंड इट शुड गेट रिलीव्ड. अगर वो आपका स्टमक पेन ही होगा बिकॉज ऑफ मे बी इंक्रीज्ड एसिड सिक्रीशन, एंड इफ इट स्टिल परसिस्ट, प्लीज आई वुड रिकमेंड call up someone and try and get adequate medication, please. Okay, fine. Coming back to our question, is that dependent portions of the body due to gravity, dependent portions of the body due to gravity, हम लोग पोस्टमार्टम स्टेनिंग का डेवलपमेंट देखते हैं, और पानी में नॉर्मली बॉडी अपसाइड डाउन आती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर पोस्टमार्टम स्टेनिंग वाटर में मिली हुई बॉडी से मिल रही है, इट मीन्स इट वाज फाउंड इन अ स्टिल वाटर. ठीक है. अगर इफ वी गो बैक टू आवर क्वेश्चन वंस मोर एंड वी सी द ऑप्शंस, जो बाकी के ऑप्शंस थे, वेदर इट इज फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और पोस्टमार्टम ड्राउनिंग, तो हमारे पास में क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज़ दी नहीं है दैट वी कैन डिड्यूस वेदर इट इज फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग. ओके, वी डोंट हैव एनी अदर फाइंडिंग अपार्ट फ्रॉम पोस्टमार्टम स्टेनिंग का अपीयरेंस. सो द बेस्ट पॉसिबल स्टेटमेंट इज दैट इट्स अ केस ऑफ ड्राउनिंग इन स्टिल वाटर. ओके, लेट्स टेक अप क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, Dr. Ravi is doing post-mortem examination of a dead body recovered from water. Okay, so Dr. Ravi is doing a post-mortem examination of a dead body which has been recovered from water. What finding will suggest beyond doubt to him that it's an antemortem drowning? Okay, so what shall Dr. Ravi find in his autopsy findings so that he has no doubt left that it looks to be a case of antemortem drowning? See to it. क्वेश्चन का मैं आंसर वेट कर रहा हूं कि सुष्मिता सेज दैट दिस इज ऑप्शन नंबर डी. Dan says she's option number D, and yeah, that's the correct answer. Okay, option number D, that is firmly holding of weeds in right hand, or firm holding of weeds in right hand, because that's the cadaveric spasm of drowning. तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया आंसर में? the concept of cadaveric spasm of drowning. Okay, fine. क्यूटिस एंसरीना, आप ऑप्शन नंबर ए में जो देखोगे वो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो कि ड्राउनिंग के केसेस में मिलती है. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज इट? कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं गूज पिंपलिंग. जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में रोंगटे खड़े हो जाना, जब कोई ठंडी चीज लगती है या फिर एकदम से कोई सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है तो गूज पिंपलिंग होती है. Okay, that is called as cutis anserina. The erector pili muscles, they get erect. Erector pili muscles. Now,
It could be seen in cases of antemortem and postmortem drowning both. Okay. Similarly, another important finding which is normally seen in 100% cases of drowning is washerwoman hands एंड फीट. ये भी आप ड्राउनिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा देखोगे. समथिंग कॉल्ड एज वॉशर वुमेन्स हैंड्स एंड फीट. ये क्या चीज़ होती है? अगर आप इसे देखना चाहते हो ना, तो अपने हाथ जो है वो पानी में डुबा के रखो काफ़ी देर तक. इनफैक्ट इफ़ यू रिकॉल, होली के टाइम पे जब हम पानी से खेलते हैं तो हमारे हाथ और पाँव की स्किन कैसी होती है? मोटी मोटी और वाइट वाइट हो जाती है ना. उसको बोलते हैं सॉर्डनिंग. वॉशर वुमेन हैंड्स एंड फीट और सॉर्डनिंग. वो सॉर्डनिंग भी इंप्लाई करती है दैट द एरिया ऑफ द बॉडी और द बॉडी इटसेल्फ was in contact with water for a lot of time. But then even this can happen in an antemortem or a postmortem drowning. Postmortem drowning क्या चीज होती है? Where you have killed the person and then thrown the body in dead water. So cutis anserina or washerwoman hands on feet, which is also known as soddening, cannot differentiate whether it is an antemortem or a postmortem drowning. But वो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं in MCQs. Okay, so be aware of that. Now another important example option which was given here is presence of muddy water in the respiratory tract. Okay, अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता ड्राउनिंग के केस में, like we do not get any cadaveric spasm or any frothing, then we need to rely upon that the presence of water in the respiratory tract is of the same quality that was actually seen in the source. तो हमें वो water matching करनी पड़ेगी. ठीक है. And then we can almost say that it looks to be that it may be a case of an antemortem drowning in the same water. But more often than not, हमने ये drowning के केस में देखा था when we were talking about dry drownings and any other atypical formats of drowning, that even after death, some amount of water that may be present around the source goes into the respiratory tract passively. Okay, goes into the respiratory tract passively. तो water का presence passively भी हो सकता है. So it is not always a very very good indicator that the drowning is only antemortem in nature. So out of the given options, seminal ejaculation का इस केस में कोई लेना देना नहीं है. After the giving of all the given options, the best answer is firmly holding weeds in right hand, which is cadaveric spasm of the drowning. In fact, if it is found in a case of drowning, it is supposed to be the most confirmatory finding of a case of drowning. ठीक है, तो ये चीज हम याद रखेंगे. Okay, coming on to question number 6. In a drowning case, on blood investigation, it is found that there is hyponatremia and hyperkalemia. Okay, so drowning के केस में हमें क्या मिल रहा है? उसकी blood biochemistry में that there is hyperkalemia, hyponatremia and hyperkalemia. The lungs are hyperinflated and voluminous. तो lungs की पिक्चर कैसी है? They are voluminous and inflated. All statements are correct except the statements are: it's a case of post-mortem drowning, it's a case of salt water drowning, antemortem drowning, can be due to falling in water tank. तो हमने क्या बताना है? ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट. नो, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं इसमें, बिकॉज
एक्सेप्ट हटा दो, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट आर रॉन्ग एक्सेप्ट. Okay, there is a little bit of typing error here, I'm sorry for that. The question is, the findings are given, biochemistry and lung findings on autopsy, all statements are wrong except, so which is the correct statement? So which is the correct statement here? Dan says the correct statement is option number, no, she retracted her message. Okay, what is the correct statement? So we need to pick one correct statement. Is it a post-mortem drowning? Is it a saltwater drowning? Is it an anti-mortem drowning? Or can be due to falling in tank water? So ये सब जानने के बाद में which is the one most appropriate correct statement? Okay, Sushmita says that the most appropriate correct statement is option number D. Minal goes with Sushmita, he also thinks the answer is D, and so does Dan, I guess, but she retracted her answer. Correct answer actually is D, because in this scenario हमने क्या देखा है, it's a case study of a fresh water drowning. It's a case study of a fresh water drowning, and option number D, that it can be due to falling in water tank. वाटर टैंक में क्या होता है, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग होती है. तो एक बारी जल्दी से फ्रेश वाटर ड्राउनिंग देख लेते हैं. एंड रिमेंबर हमने इस मॉडल की बात करी थी, दैट कंसिडर दिस इज एन एल्व्यूलस, और इस एल्व्यूलस के आसपास ये एक ब्लड वेसल है. सो दिस इज द एरिया ऑफ ब्लड गैस एक्सचेंज. ओके, ब्लड वेसल. एंड जब इंसान पानी में गिरता है, वॉट एवर वाटर कम्स इनटू हिज लंग, इट इज टर्मिनली कमिंग इनटू द एल्वुलस. लास्ट में तो एल्वुलस में ही आएगा वो, क्योंकि वो लास्ट ब्रांचिंग सेगमेंट होता है रेस्पिरेटरी ब्रांचेस का, उसके बाद कहीं नहीं जा सकता. सो दिस वाटर कम्स इनटू एल्वुलस, एंड इफ दिस वाटर इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक को मैं डाउन एरो से शो कर रहा हूं, as compared to blood which is comparatively hypertonic, blood is in the vessel. तो यहाँ पर एल्वुलस और वेसल के बीच में एक टोनिसिटी ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से, और जब भी टोनिसिटी ग्रेडियंट क्रिएट होता है परमिएबल मेम्ब्रेन्स में, तो क्या होता है, वाटर का फ्लो वन ग्रेडियंट टू अनदर ग्रेडियंट होता है. और वो किस डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक to maintain the isotonicity. So water will flow out from lungs into the vascular circulation, and as the water is coming out of lung, पानी जो है वो लंग्स में से निकल के वेसल में जा रहा है, तो लंग्स की पिक्चर कैसी होगी, ऑल्दो ड्राउनिंग के लंग्स हैं, पर उनमें बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ नहीं होगा, क्योंकि काफी सारा पानी निकल के वेसल में चला गया. तो ऐसे लंग्स को हम बोलते हैं बिग एंड वॉल्यूमिनस. बिग एंड वॉल्यूमिनस लंग्स. ओके, लंग्स की बिग एंड वॉल्यूमिनस पिक्चर होती है. और वेसल्स में सर्कुलेशन कैसा होगा, because of lot of water coming into vessel, it will be hyper dynamic hemodilution. Hemodilution होगा, rupture of cells. Because of hemodilution, cells will rupture, leading to hyperkalemia. एंड हीमोडाइल्यूशन की वजह से क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया. ओके, सो हमारे को ब्लड केमिस्ट्री दी थी प्लस लंग के पिक्चर बताए थे. दैट वाज टू फॉर अस टू कम टू अ डायग्नोसिस दैट इट लुक्स टू बी अ केस ऑफ फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, एंड देन द आंसर बिकेम सिंपल.
that it could be a case of a water body recovered from a टैंक वाटर, क्योंकि वो फ्रेश वाटर होता है. ऑन दी अदर हैंड अगर सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग होती है तो क्या होता है, फटाफट ये भी देख लेते हैं. अगेन एल्वुलस, वेसल अराउंड एल्वुलस, सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग के केस में क्या होगा, द वाटर विच इज कमिंग इनटू द एल्वुलस नाउ इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू ब्लड विच इज कंपैरेटिवली hypotonic. So the tonicity gradient has reversed. The water will flow from circulation into lungs, leading to massive pulmonary edema. क्योंकि लंग्स में वैसे ही ड्राउनिंग की वजह से पानी आ रहा है और ज्यादा पानी निकल के वेसल से लंग्स में जा रहा है. सो लंग्स की पिक्चर कैसी होगी, मैसिव पल्मोनरी एडीमा. इस तरह के लंग्स को क्या बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ लंग पिक्चर इज कॉल्ड एज हैवी एंड बॉगी. These kind of lung pictures are called as heavy and boggy lungs. ठीक है, और उनपे क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर इतना पानी भरा होगा दैट दे वुड बी प्रेसिंग ऑन टू द रिब केजेस. जब पानी भरेगा और फूलेंगे लंग्स तो क्या होगा, दे विल प्रेस ऑन टू रिब केजेस. सो दे विल हैव लॉट ऑफ रिब इंप्रेशन मार्क्स ऑन देयर surfaces, deep rib impression marks. So lung picture is heavy and boggy with deep rib impression marks on their surfaces. साथ ही में वैस्कुलर सर्कुलेशन कैसा होगा, वैस्कुलर सर्कुलेशन में होगा हीमो concentration, because lot of water has left the circulation to be into lungs, resulting in hypernatremia. Okay, so these are two different findings. These are findings in fresh water drowning. ठीक है, और इसको अगर हम सेपरेट कर दें यहां से तो दिस इज द फाइंडिंग इन सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग. तो उन दोनों में से क्वेश्चन में हमने फाइंडिंग दी थी फ्रेश वाटर ड्राउनिंग की. ठीक है जी, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज एसिड डाइजेशन टेस्ट, और एसिड डाइजेशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ. Options are hanging diatoms in the tissues to differentiate between ante-mortem and post-mortem drowning, fresh water and salt water drowning. पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेट्स सी कौन कौन पार्टिसिपेट करता है. एसिड डायटम्स, एसिड डाइजेशन टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, एसिड डाइजेशन टेस्ट. ओके, सुष्मिता सेज टू डिफरेंशिएट फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. एनीबडी एल्स? ओके, और किसी का आंसर आया नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं. पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं और उसके बाद में विल गो फॉरवर्ड. सो द एसिड डाइजेशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डायटम्स इन द टिश्यूज. ओके, इनकी बात करते हैं. हमने लेक्चर में थोड़ी सी बात करी थी. देयर आर सम सब्सटेंसेस और एल्गी एक्चुअली कॉल्ड एज डायटम्स. These are unicellular algae found in water. Their cell walls are made up of silica. So their cell walls are made up of silica. Okay, क्या होता है,
When a person falls into water and is alive and he inhales that water, तो उस पानी में जो डायटम्स है वो भी उसके साथ में उसके लंग्स में चले जाते हैं। एंड टिल द टाइम ही इज अलाइव इन दी वाटर व्हेन ही इज ड्राउनिंग, क्योंकि गिरते ही थोड़ी डेथ होगी। यू रिमेंबर हमने बात की थी, इट टेक्स फ्यू मिनट्स फॉर हिम टू डाई। दैट इज द टाइम व्हेन दोज डायटम्स मे बी पिक्ड अप इनटू द सर्कुलेशन, एंड जब तक सर्कुलेशन उसका चल रहा है they may get distributed with the ongoing circulation to various body organs. Okay, and often because the person is alive when he fell into water and the circulation is active, they get distributed to difficult circulatory levels like bone marrow. Okay, now अब मानो अगर हमारे को कोई बॉडी पानी से रिकवर हुई है और हम देखना चाहते हैं कि क्या ये एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग है, and for that we want to check whether body tissues or bone marrow does it contain diatoms, so that we can qualify it as an antemortem drowning. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We just need to take sections of tissues and inside of that parenchyma or the matter of the tissue we need to check कि diatoms है या नहीं है, and because they are small structures unicellular, so obviously उसको हमें माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कैसे करते हैं? बाय डूइंग व्हाट इज कॉल्ड एज एन एसिड डाइजेशन टेस्ट। द टिश्यू which is to be used to check for presence of diatoms, it's subjected to nitric acid. Okay, so the tissue is minced into pieces in a petri dish and it is subjected to nitric acid. Acid will burn the organic matter so acid burns the organic matter, यानी टिश्यू जल जाएगा। but if diatoms are present in the tissue, they are saved. And why are they saved? Because diatoms have wall made up of silica, so they remain unaffected. Okay, so अब हमारे पास में पेट्री डिश में एक सॉल्यूशन है, मिन्स्ड टिश्यू था थोड़ा सा, उसमें आपने एसिड डाला, एसिड ने टिश्यू को जला दिया। डायटम्स अगर होंगे तो इस सॉल्यूशन में होंगे। तो व्हाट इज डन नाउ इज दैट दिस सॉल्यूशन इज promptly centrifuged. This solution is centrifuged, and after centrifugation the supernatant is collected to prepare a smear. The super is collected to prepare a smear. अगर डायटम्स होंगे ना इस सॉल्यूशन में, so they come to the supernatant. The supernatant is collected and a smear is prepared, and then smear is watched microscopically to see for presence of diatoms. The smear is checked microscopically for presence of डायटम्स। ठीक है, तो डायटम्स को ढूंढने के लिए ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है कि टिश्यू को पहले आपने एसिड से जला दिया, फिर जो सॉल्यूशन है उसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सुपरनेटेंट कलेक्ट हुआ, जो सेल्यूलर हैवी डेब्रीज होंगी वो तो नीचे बैठ जाएंगी,
सुपरनेटेंट फ्लूइड में अगर डायटम्स होंगे तो वो आ जाएंगे। देन उसका एक स्मीयर प्रिपेयर किया और आपने स्मीयर को माइक्रोस्कोपिकली देखा, कैन यू विजुअलाइज डायटम्स? इफ यू कैन, देन दैट टिश्यू हैड डायटम्स, दैट इज द होल आइडिया। ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं एसिड डाइजेशन टेस्ट। वन ऑफ द क्वेश्चंस which has very commonly come into examinations, बहुत बारी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में से भी कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। जस्ट रिमेंबर द होल प्रोसेस। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एंड दैट इज गेटलर्स टेस्ट इज नॉट यूजफुल इन। ओके, ये वाला एक टेस्ट है जो हमने शायद उस दिन किया ही नहीं था अपने लेक्चर में, बिकॉज it's easy to discuss Gettler's test while we are conducting the MCQ session. So Sushmita answers as D. Anybody else wants to participate? Gettler's test कब useful नहीं है? It is not useful in which situation? The options are advanced decomposition, foramen ovale defect, dry drowning, all of the above. And Sushmita and Dan both have answered as option number D. Okay, let's see Gettler's test होता क्या है, उसका significance क्या चीज है। Now Gettler's test is a test to differentiate between fresh water drowning or salt water drowning. Okay, Gettler's test is a test to differentiate between fresh water drowning और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। सो ये एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं होता। करते क्या है गेटलर्स टेस्ट में, यू नीड टू टेक सैंपल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट साइमल्टेनियसली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यू नीड टू चेक फॉर इट्स क्लोराइड कंटेंट। सो अगर हम राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को देखें, दिस बीइंग द लेफ्ट, दिस बीइंग द राइट, द नॉर्मल क्लोराइड कंटेंट इन बोथ द साइड्स इज 500 मिली इक्वलेंट्स। सो दोनों साइड पे नॉर्मली 500 मिली इक्वलेंट के आसपास का क्लोराइड कंटेंट होता है इन एन एवरेज नॉर्मल पर्सन। नाउ व्हाट हैपेंस in fresh water drowning? फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में होता है हीमो डाइल्यूशन, because of which the left sided content of the chloride gets diluted. So जब आपने वहां से सैंपल लिया, आपको क्या दिखा, chloride is less in the left hand side, so comparatively right hand side पे आपको क्लोराइड बढ़ा हुआ मिलता है। See, solute mass में कोई चेंज नहीं आया, it's only because of hemodilution the left sided concentration got diluted. Okay, and that is why you think the right sided is elevated. Okay, and what happens in salt water drowning? Hemo concentration, and because of which the left sided concentration of chloride is elevated, and in comparison the right sided concentration of chloride seems to be decreased. Okay, if this is the result that we get from the sampling, we can deduce that it looks to be a case of salt water drowning. Now in both the cases, in Gettler's test, for it to be positive, the difference between
the chloride contents. So difference between the chloride content of both sides should be greater than 25%. तो दोनों के ही बीच में क्लोराइड कंटेंट्स का जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 25% से ज्यादा होना चाहिए फॉर द टेस्ट टू बी सिग्निफिकेंट. व्हाट आई मीन टू से इज दैट इफ it is a freshwater drowning, okay, and the left sided concentration of chloride is 300 milliequivalent and the right sided concentration is 500 milliequivalent. Now the difference between the two is more than 25%, so we can say acceptable, so we can label this as a freshwater drowning. Now what do we see in Gettler's test is that this test, although it is not very reliable, ज़्यादा reliable test नहीं है ये, okay, पर इसका theoretical importance है, but फिर भी the reliability of the Gettler's test depends upon the intact partitioning of the heart. यानी कि heart का जो partition है which keeps the right hand side and left hand side separate, वो इंटैक्ट होना बहुत जरूरी है. जहां पर भी कोई लीकेज होगी वहां पर गेटलर्स टेस्ट किसी वैल्यू का नहीं रहेगा. सो इफ वी गो बैक टू आवर क्वेश्चन, व्हाट डू वी सी इज दैट इन केसेस ऑफ एडवांस्ड डीकम्पोजिशन द मेम्ब्रेन्स separating both the sides of the heart would be leaky because cells will be dying out. So the fluid will leak through the decomposing membranes, so Gettler's test will not be of any value because mixing होनी चालू हो जाएगी left and right sided fluid की या concentration की. What is the scenario in foramen ovale? The right sided concentration starts to get mixed with the right sided concentration because of the patent foramen ovale. Okay, तो वहां पर भी Gettler's test किसी काम का नहीं है. And in cases of dry drowning, क्योंकि पानी गया ही नहीं रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर, बिकॉज द कॉज ऑफ डेथ इन ड्राई ड्राउनिंग इज लैरिंजियल स्पाज्म, तो वहां पर गेटलर्स टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है. ओके, एंड सो आवर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो रिमेंबर इन गेटलर्स टेस्ट सिनारियो, इफ द परमेबिलिटी बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द हार्ट exists, then Gettler's test is of no value. ठीक है जी. So these were some questions which I wanted to discuss. Some of the questions we have already talked in our lecture. कुछ हमने अपने लेक्चर में बात नहीं करे थे, उनको हमने आज एड्रेस करने की कोशिश करी. अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है, you know where to catch me. You need to catch me at Telegram app livedaily.me at NEET PG. Okay, now that we are going for a long time, I don't need to tell you the benefits of Unacademy subscription, but I think अब आप उनको देखना easily समझ सकते हो. Live classes, interactive educator के साथ में classes, somebody who are not afraid not to take up your query. सिर्फ ऐप पे नहीं, क्वेरीज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस में भी होती हैं. इसका मतलब एजुकेटर्स आर रेडी, दे नो दैट दे आर गोइंग टू बी क्वेरीज विद यू इवन आफ्टर एग्जॉस्टिव सेशंस ऑफ टीचिंग. सो दे प्रोग्राम डाउट क्लियरिंग सेशन सो दैट स्टूडेंट्स कैन कम अप एंड देयर क्वेरीज कुड बी सॉल्व्ड. ये सारी चीज़ें आप अगर अपनी नज़र से देखना चाहते हो, special classes are the window for you to look into the world of NEET PG Plus. Go and watch special classes absolutely free on the app. और उसके बाद में when you are completely sure कि मुझे Unacademy का NEET PG subscription चाहिए because this is the best portal providing you subscription for your preparation of NEET PG entrance examination, आपने install करना है Learners app
लर्नर्स ऐप इंस्टॉल करके यू नीड टू गो टू नीट पीजी सेक्शन, वहाँ पर यू नीड टू चूज प्लस एंड ये देखिए ये रहा स्पेशल क्लास का टैब। जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको स्पेशल क्लासेस दिखाई देंगी विच आर एब्सोल्युटली फ्री। प्लस सिलेक्ट करने के बाद में आपको सिर्फ पेमेंट करनी है टू गेट सब्सक्रिप्शन एंड आपको पेमेंट किसकी करनी है, 12 मंथ की या 24 मंथ की, बिकॉज दैट्स द बल्क सब्सक्रिप्शन यू वांट टू हैव बिकॉज दे कम विद लॉट ऑफ डिस्काउंट्स एज कंपेयर टू मंथली सब्सक्रिप्शंस। और जो भी अमाउंट आपकी स्क्रीन पे आने वाला है उसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे DRSUMIT लाइव, आपको मिलता है 10% डिस्काउंट और उस 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फिगर होती है फॉर नीट PG 24 मंथ्स इट इज़ 36,000 एंड फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 24,750. ओके, प्राइजेस हैव एस्केलेटेड। आपके पास पेइंग ऑप्शन हर तरीके के हैं, पे इन पार्ट्स और इन फुल, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट ट्रांसफ़र, UPI, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। इस क्लास में बने रहिए, क्लास को सब्सक्राइब करते रहिए, हम आगे चलेंगे। वी विल कवर अप लेफ्ट ओवर टॉपिक्स ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। अभी हमने शुरू किया है अपना जर्नी और हम उसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी कवर करते रहेंगे थ्रू MCQs। कम ओवर एंड अटेंड दी MCQs क्लासेस। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा इफ़ यू डिड लाइक दी क्लास। ओके, चलिए फिर हम मिलेंगे। आज शाम को हमारा लेक्चर नहीं है। ओके, नॉर्मली 7 से 8 हमारी यूजुअल डेली क्लास होती है। सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर रेगुलर ऑन देयर डेली क्लासेस, आज शाम को 7 से 8 दैट इज़ ऑन 2 सितंबर हमारी नहीं है क्लास। द नेक्स्ट शेड्यूल विल बी अपडेटेड टू यू। प्लीज़ लॉग ऑन एंड फाइंड आउट कि हमारा नेक्स्ट शेड्यूल कब आ रहा है। ठीक है, इट वुड नॉट बी मैनी डेज, इट्स जस्ट 1 और 2 डेज। हम शाम को दोबारा आएंगे, आपको एक नेक्स्ट शेड्यूल मिल जाएगा। ओके, टेक केयर एंड बी सेफ। रिमेंबर माय रेफरल कोड इज डॉक्टर सुमित लाइव। किसी को भी ज़रूरत हो जिसे नेट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो किसी भी तरीके का, यू कैन use this code, you can utilize this code, you can send this code to any of your social media because जो भी यूज़ करेगा उसको 10% का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, सी यू व्हेन वी होल्ड आवर नेक्स्ट क्लास। एंड क्लास टाइमिंग्स के लिए प्लीज़ साइट पे नज़र बना के रखिए। बाय।